let's get started. It's a creative thinking workshop. And creative thinking by its term, we mean the lateral thinking. We'll see further in a few seconds more on the topic, but then the idea is creative thinking is not part of our essential thinking culture. So there are steps. So let's say in step number one, we will understand what is the need, why it is needed, where it is needed, and then we will see the techniques. That is part two. And in the third part, possibly we'll see applications and culture. So we'll start the presentation now. What we'll discuss. So this is the topic that I spoke of, need, techniques, applications. We'll be covering only the need today. So this is the father of, you can say, lateral thinking. He's Mr. Edward de Bono, and he's the most contributing person in this field of creative thinking and lateral thinking. He invented various terms. You can see his collates on the slide. So he wrote many books, which got converted into many languages. He was a scholar associated with a lot of big universities, and then he was associated with a lot of big organizations like Nippon, Microsoft, and a lot more, where people adopted his techniques. And he's also inventor of one of the code thinking programs, CORT. It is the only unique thinking program which is being applied to schools in Asia and Europe and various other countries. But it's still not well adopted. But he has contributed, you can say, 40, 50 years of his life to do into creative thinking. So we want to pay some homage to him, and it is on his book. This course is also based. He is also recognized as one of the most 20 influential people who has contributed to mankind. He falls into that category. Somewhere like people like Mahatma Gandhi and basically people like Mother Teresa falls. So let's go further. So what is the need of creative thinking and what it is really? Why do we need creativity? So as you can see, humor is most important, right? Humor touches a lot of part of our lives, and it seems to take us always by our jaws open. It seems to grab us, in every possible way. What is humor essentially, and why does it matter, and how does it link to creativity? So human brain essentially is a self-organizing information system. It's a new term again invented by Mr. Edward de Bono, and he proved that there are systems in the nature or science which are self-organizing systems. You can also call them dynamic systems. Right? So you can think of active system and passive system. So human brain is not like a passive system like a library. So library is quite a passive system where books are stacked on top of each other or alongside each other in different racks, but nothing is merging and mingling, right? But what is a self-organizing system? Where it assembles, it links itself. For example, you read a book on creativity and you read another book on creativity, part two. So that information in the second book, or even if you read on another topic, let's say, that information goes into the brain and rearranges itself into patterns. Like we'll go more into that. But just understand that information is getting arranged in terms of patterns, or let's say pathways. You must have also heard of neural networks in the brain. You must have heard of basically neural-like pathways programming. There are a lot of techniques, psychology techniques are based on this, like Honopono technique, like affirmations, like NLP programming and other types of feelings, where you rearrange the brain, or you rather, so to say, you create new neural pathways by repeating certain practices and putting them into habits and such. So it's a lot of complexity there, and even in the technology, lots of progress has been made in this area. Earlier, we have not been able to contribute much, but recently there are things like fuzzy logic. Fuzzy logic is where boundaries are not fixed. For example, you ask computer to learn a picture of a tree, and you just gave it 6 different images, let's say,
So there are fuzzy logic. So the computer will recognize that one of the tree clip art looks like a rounded, another one looks like a pine having thorns, and third one looks like palm leaves and such. So different types of boundaries, and it will merge and mingle and learn from that. So that's fuzzy logic at a very, very simple level. Then catastrophe theory, disruptive innovation, and so on. And when we keep hearing about deep learning and machine learning. So it's very complex, but at very simple, it's a self-organizing information system. So let's see how that links to our uh, presentation. So preferred pathways, the one that we discussed earlier. Patterns helps us to recognize things. So what is the help of patterns? So we will see what we want to see, or we see things in terms of past experience, or you can call it brain only sees what it is prepared to see. Why? Because patterns are formed based on the time sequenced operations that happen in your with you. So the brain registers that information, and then you see the next experience in the light of the previous experience. So it's, you can say, biased. Just for example, take this box here. Look at this picture here. You see three stacks. ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला जो है समझो green squares and blue circles, right? तो समझो all those are cylinders like glasses, और उसमें हमने इस तरह के shapes हम boxes insert कर रहे हैं. So they will be there in the order that you inserted them, right? Because of certain limitation of the cylinder. जैसे समझो कि आपने पहले blue ball डाला है, first वाला, look at this one. तो ये ऊपर वाला रो है, तो जिस पैटर्न में गया है उसी पैटर्न में वो स्टोर होगा, तो पैटर्न बन जाएगा इसका, because of the limitation. What are preferred pathways? Computers are unable to do pattern recognition. It's very hard for them, and there is a lot of work in deep learning that's going on for computers to be able to recognize patterns. It's a very niche concept, but our brains do it instantly. Brains are, you can say, basically champions of automation, or they immediately recognize patterns and create patterns. And there is a very dedicated subject related to patterns that also creates habits. So neural networks and pattern making behavior of the brain is really magnificent, without which life would be impossible, because life is really complex. The real life that our senses have to go through, so many pictures, so many gadgets, so many information, so much overload of information, and so much basically chaos and cacophony of noises, and so many cores to look after in terms of work and office and everything. So our brains really would be overwhelmed, and we would not be able to survive without this magnificent power of the brain of forming patterns. So the patterns save time. Patterns help us to see quickly in less information. We'll see something that brain wants to see. It's a very interesting topic if you look at like that. कुछ क्वेश्चंस है क्या अभी तक समझ में आ रहा है सबको? हेलो, am I audible? Yes, 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 Mumta. yes. Clear है, समझ में आ रहा है? Yes. Okay, great. So कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग स्टॉप करो, और कुछ स्लाइड या आवाज का प्रॉब्लम होगा तो भी बताओ, ठीक है? So this is very interesting topic. A lot of research is going on, but understand so far कि न्यूरल pathways होते हैं, और न्यूरल pathways will define how you see a new situation in light of the previous pathway. जैसे रेन गिरती है एक लैंडस्केप पे, प्लेटू पे, फ्लैट सरफेस पे जब बारिश होती है, तो हमें पता है इट फॉर्म्स इट्स ओन पैटर्न्स which makes basically tributaries or rivers or streams of water and also waterfalls. तो उसी रास्ते से, so it takes the path of least resistance first, और दूसरी बार रेन गिरेगी तो it follows the same path. ये सबको पता है? ये एग्जांपल सबको पता है? Great. So it's a very simple example to be able to relate to of this brain का neural patterns. Don't go very complex. Just think of the rain forming a pattern, and the next time rain falls, it follows the same stream rather than creating another path of higher resistance. तो हमारा brain भी वैसा ही है. Next time you see that picture, which is in the light of previous one, तो आपको you will see only, let's say, the difference made, or you will see it in the light of the previous one. Okay, let's go further. Humor. So humor, it relates to creativity very closely.
These are pictures from the book. And if you see the pathway in the first picture, left side, A से वो सीधा सीधा जाता है, तो that is like our main route of thinking. Think of it like a road or a highway. ठीक है? ए पे जहाँ ए लिखा हुआ है लेफ्ट पिक्चर में, वहां से वो बंदा चलना शुरू कर रहा है सीधा सीधा आगे. तो द मेन हाईवे और दैट स्ट्रेट चैनल इज द यूजुअल थॉट ऑफ लाइन ऑफ थॉट दैट यू हैव रिलेटेड टू एनीथिंग. लेकिन ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर इज लाइक दैट कर्ल, स्पाइरल कर्ल कर्व जो ऊपर जा रहा है. तो जैसे आपने कोई जोक सुना, ठीक है, तो जोक में क्या होता है? वी बिल्ड द सस्पेंस एंड इन द एंड देयर इज अ पंच लाइन, एंड देन विद दैट पंच लाइन यू गो बैक टू द मेन लॉजिक. समहाउ इट रिलेट्स इन द एंड. ए पे हम जा रहे थे और अचानक कुछ ऐसा पंच लाइन आता है जो वो स्पाइरल कर्व करके वो जंप करता है. इट जंप्स द यूजुअल लाइन ऑफ थॉट. वो मेन पैटर्न से बाहर आ जाता है. जैसे समझो कि वो रेन वाला स्ट्रीम वाला एग्जांपल है कि छोटा सा एक स्ट्रीम बन गया पानी का, और आपने एक लकड़ी लेके एक्सप्लिसिटली उसको बाहर खींच के दूसरा रास्ता बनाया. ये भी सब लोगों ने पैटर्न मतलब देखा होगा. सिंपल एग्जांपल, वी कीप प्लेइंग विद द रेन एंड वी हैव डन सच थिंग्स इन बेसिकली व्हेन वी वर स्मॉल. तो उससे क्या होता है, आप एक पंच लाइन खींच रहे हो वहां से. तो ह्यूमर में क्या होता है, एक पंच लाइन आती है, वो आपके यूजुअल थॉट पैटर्न को ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके यू फाइंड अनदर पाथवे देन बैक टू द लॉजिक. नाउ बी टू ए, जर्नी फ्रॉम बी टू ए, जो ऊपर से आ रहा है रोड एंड गोइंग टुवर्ड्स ए, दैट इज हाउ यू स्माइल. दैट इज हाउ द लाफ्टर कम्स, बिकॉज although the joke was illogical, it finally relates back to the logic, and then which gives rise to actually a joke or humor. नहीं तो क्या होगा, अगर पंचलाइन के बाद लॉजिक से रिलेट नहीं होगा, तो इट विल जस्ट अपीयर लाइक एन एब्सर्ड आइडिया. कि आप किसी ने जोक सुनाया, आपने को समझ नहीं आया, तो कैसा होता है रिस्पॉन्स? है ना? तो लाफ्टर विल ओनली कम व्हेन यू विल बी एबल टू रिलेट इट टू इट इन अ लॉजिकल वे और विद लॉजिक. So what it is an asymmetric jump that gives rise to both humor and creativity in your brain. So the reason how brains are wired like self information systems, इसीलिए ये humor is possible to jump out of the usual patterns. Otherwise, if we don't take this deliberate effort, which also tells us कि why lateral thinking is so very the progress in the field of creative thinking is so very poor in the world, because it requires some deliberate effort. इसमें कुछ मिथ्स भी है, हम मिथ्स भी देखेंगे आगे थोड़े. बट ये सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है? नहीं. So we'll see. Okay. ये जोक पढ़ सकते हैं. So here are some jokes for you. So humor is nothing but a logical perception which eventually makes sense. In the end, you will see that it makes sense back to the logic. A system that collects information over time. So it's a time sequence trap. तो हम एक स्क्रैम्बलर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उसके थ्रू समझते हैं. समझो, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल. एक समझो आपके पास वो गेम है टेट्रिस जैसा. तो बेसिकली फॉर अदर्स हु डोंट नो, it's a building blocks kind of a game where blocks keep falling and you have to arrange them in shapes, arrange them on the floor. So let's say the letters are falling in this game and you see the sequence of letters which is written here. First you get A, so you can only form, and it's like a Scrabble kind of a game where you form words with the letters which are available. So A आता है, फिर A के बाद A, T, and then you get R. तो think of the letters arriving from the left side. तो पहले A था, A के T आ गया, and then R आ गया तो rat हुआ, and then E आया तो आपने इस साइड या उस साइड पे आपने अरेंज किया. Great आ गया, G जब आया तो you have a word called as great. But when you got T, let's say, तो T के लिए अभी आप लेफ्ट और राइट साइड पे रख के you cannot form this word. Okay, now this target is a breaking of this previous pattern. पहले जिस पैटर्न में we got from A to great, which was just putting the new letter that you got on the left or right side of the existing word, ये पैटर्न डिसरप्ट हो गया with the target. क्योंकि टारगेट वर्ड आप नहीं बना सकते जस्ट लेफ्ट या राइट साइड पे रख के, the last with the last letter that you got.
it requires breaking of the existing pattern. तो इससे पता चलता है इस एग्जांपल से कि हमारे ब्रेन में भी इफ यू आर विद द टाइम सीक्वेंस ट्रैप, आपकी ब्रेन में या हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो कई बार वो नई इंफॉर्मेशन उस पैटर्न से ही देखने के चक्कर में हमें समझ नहीं आता, वी कैन नॉट सी अल्टरनेटिव्स, बट देन इफ यू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग पैटर्न, you suddenly see the new ideas, or you suddenly see new ways of doing the same thing. Or let's say to form this word called as target, आपको disrupt करना पड़ेगा existing pattern. Hence, so this is the time sequence trap. Let's go further. So disruptive innovation, I already talked about it. Look at the lower picture, small map, okay, and look at the bigger picture, big map. तो जो small map है नीचे वाला, that is a small portion of the top picture. As you can see closely, if you can see closely, you will understand. तो let's say only the नीचे वाला पिक्चर खाली आपको दिखाया और आपको पूछा कि आपको 3 डायरेक्शन है, नॉर्थ में जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो आपको अगर नॉर्थ जाना है तो आप कौन सा रोड लोगे? तो आई थिंक all people that are shown only the small picture, they will choose the road shown in the arrow, कि नॉर्थ के लिए हम ऊपर वाला रोड लेंगे, because this is the picture you see. ठीक है? Now take a pause here and think, and then suddenly after a pause, आपको big picture दिखाया गया, the map above. Now you see that the road leading to the north is blocked. So the idea or the decision that you took in the previous problem or with the previous statement came up to become wrong when you had a bigger perspective or when you had a bigger picture. क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि सामने ब्लॉक्ड है. Now what is the alternative route to go north? कौन बताएगा? आशीष? Left turn or right turn? हाँ, लेफ्ट लेके राइट, करेक्ट, या फिर राइट लेके आगे जाके लेफ्ट, क्योंकि आगे Yes, आपको yes. बड़े पिक्चर में मैप में दिख रहा है कि आगे से नॉर्थ इवेंचुअली जा ही रहा है, दोनों रोड नॉर्थ ही जा रहे हैं, उसको छोड़ के नॉर्थ जा रहे हैं, जो हमने चूज किया था उसको बस छोड़ के बस बाकी सब नॉर्थ ही जा रहे हैं. तो उल्टा सोच रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया. हम सोच रहे थे कि नॉर्थ ही नॉर्थ जा रहा है नीचे वाले पिक्चर को देख के, और लेफ्ट और राइट किधर और लेके जा रहे हैं, एक अपने को लंदन लेके जा रहा है, एक किधर और लेके जा रहा है. बट व्हेन यू सी द बिग पिक्चर, यू सडनली नो कि नॉर्थ वाला ही नॉर्थ नहीं जा रहा है, बाकी दोनों नॉर्थ जा रहे हैं. तो दिस इज हाउ क्रिएटिविटी कैन टेक अ सडन जंप. दिस इज हाउ क्रिएटिविटी कैन, दिस इज हाउ बेसिकली ह्यूमर वर्क्स आल्सो. कि जैसे जोक हो गया, ये तो बड़ा मैप दिखाएंगे तो वो हंसने लगेगा, ये जोक हो गया कि नॉर्थ इज नॉट गोइंग टू द नॉर्थ. So this is how, so this is disruptive innovation. Disruptive innovation industry term है for IT and lots of startups and all this. They use in the, it's a current markets buzzword. इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आप existing trend को break करते हो and you disrupt someone's market, you disrupt yourself maybe. है ना, जैसे Paytm disrupted the paper money concept. It brought everything digital, right? Paytm, PhonePe. So disruptive innovation. तो इसमें perception का बहुत importance है, because without creativity we cannot make full use of information. You can read the line below, it's and is locked up in the old structures and patterns and concepts and perceptions. ठीक है, let's go further. There is an intelligence trap. Let's see that now. इसमें क्या होता है कि you see the picture below, you see the picture on the left and picture on the right. So typically क्या होता है कि when you have intelligence, because intelligence is like power of the car and thinking is like the driver of the car. So you can read the line on the first, intelligence or thinking. तो generally में क्या होता है कि if someone's IQ is very good, like किसी का IQ 150 है, 180 है, 200 है, like so we basically start measuring people in terms of IQ, but we forget to collect that IQ is your, let's say, your intelligence quotient. Okay, but then thinking is like the skill of the driver. Okay, so having a potential car with you is not going to take you anywhere unless you know the driving skills or you have a legible driver who knows his way around the roads. Okay, so intelligence, and then typically it is used to defend the view. दूसरा ट्रैप क्या होता है कि if you are highly intelligent or if you someone falls in the very high IQ range,
तो they tend to look at situation and then they tend to judge the situation immediately. You can see in the picture below, left side. Seeing होता है और डायरेक्टली जजिंग होता है. क्यों? बीच में कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई हैव एन हाई IQ. बट टिपिकली क्या होना चाहिए इन द केस ऑफ एक्सप्लोरिंग सिचुएशंस, we become a good thinker or we learn techniques of the creative thinking. So even with the intelligence trap is that if you are intelligent, you don't need to learn creativity, or you are creative enough, or maybe you are intelligent enough. But which is a myth, as we will see. We saw now, and then we will see in the myth slide also further. But तो seeing और judging के बीच में क्या होना चाहिए? Exploring. So you will be given some techniques, maybe not today in session because there is a lot of content to cover. We'll see what we can cover today, but for the techniques, there will be a separate session, perhaps part 2, and then another one maybe. But exploring वाले केस में you are using the techniques. आपको जो tools मिलेंगे या tools आप use कर सकते हैं, वो आप explore कर रहे हैं, and you saw the situation from different angle, and then you came up to a judgment or a solution or an answer or a response. ठीक है? So that is intelligence. Okay. Isn't information sufficient? So what is information? अगर information है तो creativity की जरूरत ही नहीं है. जैसे बताया कि अगर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया एज इट इज, स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 3 करो, स्टेप 3 ऐसे करो, 4 ऐसे करो, 5 ऐसे करो, तो आप बोलेंगे कि फिर मेरे को सोचने के लिए उसमें स्कोप नहीं है, राइट? वी जस्ट फॉलो द प्रोसेस. तो इजंट दैट सफिशिएंट इज द क्वेश्चन, कि वो इनफ नहीं है क्या? क्रिएटिविटी का नीड क्या है? हम नीड वाला सेक्शन देख रहे हैं ना आज, कि क्या नीड है क्रिएटिविटी का. वी आर सीइंग डिफरेंट एंगल्स व्हाई क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस. वी विल सी टेक्निक्स लेटर, comes at a later point, but पहले ये समझ में आना चाहिए कि है क्या, क्यों चाहिए. नहीं तो we will not take deliberate effort. बाकी के सेशन की तरह सुन के आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे. ये हैबिट कैसे बने, ये रेगुलर चीज कैसे बने ना आपका. देखो सेकंड नेचर क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? सेकंड नेचर कैसे हमें आदत पड़ जाती है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में. तो क्रिएटिव थिंकिंग हाउ कैन इट बिकम लाइक दैट, कि आदत बन जाए, सेकंड नेचर बन जाए. किसी ने आपको बोला कि अरे ये पहाड़ है यहाँ से कूद जाओ और आपने सोचा ही नहीं, आप कूद गए, राइट? सो दैट इज अ वेरी फनी एग्जांपल, आई नो, बट देन द आइडिया इज यू डिड नॉट थिंक, राइट? तो इट कुड बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ इफ यू डोंट थिंक. बट जनरली क्या है, वी अवॉइड थिंकिंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. वी विल सी लेटर और आई विल डिस्कस लेटर कि क्यों अवॉइड होता है, क्यों हाइड होता है, एंड व्हाई वी डोंट टेक डेलिबरेट. बट इट इज ऑल्सो वन रीजन इज द वेस्टर्न थिंकिंग. तो वेस्टर्न में कैसा है, बाय द फिलोसफी ऑफ द वेस्टर्न थिंकिंग देयर वर पीपल लाइक एरिस्टोटल, Socrates and Plato. These were like the three big pioneers of Western logic and thinking. They were from Greek, all three gods, not gods, they were people, but then they did a lot of magnificent work in terms of logic and giving the guidelines to the Western logic and science. तो उसका कैसा है, it can be summarized like this: if it ain't broken, don't fix it. We don't क्रिएटिव का हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देखते हैं रियल लाइफ में, है ना? अगर जैसे हमें पता है, कौन रिलेट कर पाएगा? जैसे हमारा फोन का आप ले सकते हैं एग्जांपल. तो फोन खराब नहीं होता है. कोई ऐसा है क्या जो फोन नहीं खराब है तो भी रिपेयर करने के लिए जाता है, या उसको रेगुलरली क्लीनिंग करता है, या रेगुलरली उसको साउंड चेकिंग के लिए जाता है? ऐसा कोई करता है क्या? अमृता नहीं. नहीं करते ना. चप्पल टूटती है तो हम ठीक कराते हैं, राइट? ड्रेस में कुछ फटता है तो हम उसको ठीक करते हैं, राइट? सिमिलरली एनीथिंग इज ब्रोकन देन वी फिक्स इट. तो ये एटीट्यूड ही है हमारा. मतलब आप देखोगे ना, बच्चों से लेकर बड़ों तक, वेस्टर्न से लेके इंडिया तक, इधर तक, और इवन एशियन कंट्रीज में भी. एशियन कंट्रीज में कुछ पार्ट डिफरेंट है, दैट वी कैन सी सम एग्जांपल्स, स्पेशली लाइक जापान. They work on improvement a lot, and not just they fix broken things, but they keep improving things, which we'll see later. But it's an attitude we ought to develop. टूटा नहीं है तो फिक्स नहीं करना है, ये टिपिकल हम सीते हैं इस स्टाइल से. दैट्स व्हाई वी डोंट फाइंड देयर इज इंपॉर्टेंस, एनी इंपॉर्टेंस इन बीइंग क्रिएटिव. स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन क्या है? इट्स लाइक गेसिंग. जैसे बच्चे फटाफट करते हैं. ये बच्चों को बोला कि अरे इमेजिन करो कि ऐसा ऐसा होता, तो फटाफट वो विजुअलाइज करते हैं. दे आर वेरी गुड विद दिस. Creativity is needed to generate alternate and parallel speculations. तो हमारा कैसा रहता है विद एडल्ट थिंकिंग? वी थिंक कि जो सोचा है या जितना हमने
पैटर्न्स के हिसाब से हम देख रहे हैं हमारे, तो दैट इज हम बायस्ड होकर हमें लगता है कि वो करेक्ट है, एंड वी जनरली आर नॉट वेरी ओपन फॉर स्पेक्युलेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कि अरे कोई क्या बोलेगा, इट माइट सीम वेरी एब्सर्ड, राइट, अरे फनी है, या टाइम ही नहीं है, या ये तो जैसे अगेन मिथ, ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है, व्हाटएवर। तो बहुत सारे उसमें मिथ्स होते हैं, बट स्पेकुलेशन इज वन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नेवर सफिशिएंट, इट ऑलवेज कम्स रैप्ड इन कॉन्सेप्ट्स एंड परसेप्शंस। आप जो भी देखते हैं वो आपका परसेप्शन होता है, उसमें से अगर हम जैसे समझो एक सिचुएशन हो गई किसी के भी साथ, कोई फेल हो गया एग्जाम में फॉर एग्जांपल, और एनी सिचुएशन हैपेंड दैट बेसिकली डिस्टर्ब द पर्सन फॉर सम टाइम, नाउ दैट इंफॉर्मेशन came wrapped in his perception. So in order to decode what was the information and what was the concept with what happened and what ideas could be applied or learnings can be applied, उसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा उस सिचुएशन। तो द थिंग टू स्टार्ट विद इज परसेप्शन। उसने जैसे उस सिचुएशन को समझा है, उसको वही नहीं पता कि मैंने जैसा समझा है वो करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज ही विल ऑलवेज बी इन दैट ट्रैप, इंटेलिजेंस ट्रैप अगेन। तो स्पेकुलेशन इज वन एसेंशियल गाइडिंग प्रिंसिपल used by various techniques in creativity. You don't hide away, you don't shy away from taking wild guesses or speculations to break away from the existing patterns deliberately. ठीक है? So we can do it like the some of the questions shown here. जैसे कोई भी situation हो, आप कोई भी idea पे बात कर रहे हैं, आप कोई alternative solution पे बात कर रहे हैं, आप कोई problem fix कर रहे हैं, you are in a meeting, right? So you can ask these questions. What would happen if? तो ये हम कितना कम पूछते हैं, वी डोंट, सो एज आई सेड कि वी शाई अवे, वी हैव सो मेनी ब्लॉक्स, तो हम नहीं पूछते हैं, बट टिपिकली यू कैन आस्क लाइक दिस, हाउ कुड दिस बी सीन इफ डन इन दिस वे, डू वी नो अबाउट दिस और आर वी जस्ट इग्नोरिंग दिस, और इज देयर एनी assumption? तो आप स्पेकुलेशन लेकर के यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस दैट विल ओपन अप द मैटर एंड यू माइट बी अनकवरिंग some better alternatives there. ठीक है, let's move on. So myths is equal to mithya. Now it's all false. So there are lots of misconceptions on the slide. It is natural talent and that cannot be improved. लोगों को लगता है कि अरे जैसे बताया पहले भी कि नेचुरल टैलेंट है बच्चे का तो ही वो जीनियस है. We think of prodigies as prodigies and rest of them not as prodigies. कि अरे हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं बन सकता, हमको लगता है पिकासो नहीं बन सकता है, तो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो सकती, ऐसा एक मिथ है. फिर रिलीज एंड रेबेल्स, हमें लगता है कि रिलीज होने से ही क्रिएटिविटी होती है, जब इनहिबिशंस को रिलीज किया जाता है, आपके पैटर्न्स थे, आपको कुछ मिसबिलीव्स थे, वो जब टूटते हैं तो अचानक आप क्रिएटिव हो जाते हैं, यू सडनली रिफ्रेश, राइट. एंड देन देयर इज अ थॉट ऑफ रेबेल्स. मैं एक एक करके ले रहा हूँ ऑल द पॉइंट्स. रेबेल्स मींस हु पीपल हु रिबेल टू एवरीथिंग. स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको पता है, जो बेंच पे खड़े होके चिल्लाते ही है, जो टीचर को तंग करते ही है, राइट. तो दीज आर रेबेल्स कि हमको वी डोंट वांट टू कंफर्म टू द सोसाइटी, वी विल ऑलवेज ब्रिंग अ रिबेलियन. हम मोर्चा लेके आ जाएंगे, आप कुछ भी लॉन्च करो आप कुछ भी पढ़ाओ, अब लोग नहीं मानेंगे. तो रेबेल्स होते हैं ना, तो रेबेल्स, रिबेलियन वाला जो कल्चर है उसमें उसको भी क्रिएटिविटी से जोड़ा गया है. पीपल थिंक के it's a myth, it's not related to that. Then another beautiful myth is right or left brain. ये किस किसने सुना है? ये सबको पता है क्या? हम सुनते ही हैं ये राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, किसने सुना है? At any given time your right and left cerebral cortex दोनों काम कर रहे होते हैं. And there are definitely certain centers, जैसे poetry है तो right center is developed in a more evolutionary way. So there are some parts which right process is better, but that doesn't mean you can only function with the right brain or you are more right brain or left brain. So overall it's a myth. It's a mix of brain centers that are working at any given time. Then there is another misconception with artists and art. हमें लगता है आर्टिस्ट ही क्रिएटिव हो सकते हैं, राइट. हमें लगता है पिकासो नहीं तो सब नहीं बन सकते, सब लोग कैसे डिजाइन थिंकिंग करेंगे. ये बहुत बड़ा मिथ है. हमें लगता है कि इट इज ओनली फॉर आर्टिस्ट्स और इट इज ओनली फॉर आर्ट, है ना. पेंटिंग किसको समझ में नहीं आता है कि पेंटिंग में क्या है, कम लोगों को समझ में आता है पेंटिंग में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, या पोर्ट्रेट भी समझ में नहीं आता है, लोग ऐसा बनाते हैं. तो ऐसा नहीं है. क्रिएटिविटी, दिस आर्टिस्ट क्रिएटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है. And there could be an artist who is not a good creative thinker, ऐसा भी हो सकता है. So although he might be a Van Gogh or he might be a Rembrandt or
beautiful artist in its own right, in his own right, and he may still be a poor thinker. He may still be a very poor literal thinker, and he may still be a ego maniac, जो सुनना ही नहीं चाहता किसी और का व्यू. आपको पता है सक्सेसफुल लोगों के साथ ऐसा होता है ज्यादा. तो इट इज ऑल्सो अ मिथ कि आर्टिस्ट्स कैन ओनली बी क्रिएटिव. दे आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, but they are. Then if it's a good combination, like an artist who is a good creative thinker, then he will still do much more well, and he will not be succumbing to a specific style for his life. He may want to experiment, but that's a very debatable topic, and we'll see. We don't want to go into much detail on that because we have more things to cover. Now there is intuition. ये दूसरा एक मिथ है कि सबको लगता है कि इंट्यूशन आएगा तो ही आइडिया आएगा, है ना? बट दैट इज नॉट द ओनली वे टू बी क्रिएटिव. इज अ मिथ. तो इंट्यूशन आएगा तभी आपको कुछ मैजिक आइडिया आएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे. दिस इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सक्यूज दैट वी गिव आवरसेल्व्स. इंट्यूशन आता है, ठीक है. दिस डजंट मीन कि हम जो बोल रहे हैं वो, या इंट्यूशन वाला जो आपने सुना है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट नहीं है. You can give your problem to your subconscious mind, and it will definitely come up with all your with the processed alternatives and solutions. But the idea is it's not the only way of being creative. Intuition के लिए आप जिंदगी भर वेट करेंगे, that is not a good way because it's a myth कि intuition से ही creativity हो सकती है. Then there is a scattergun success, the next point. Scattergun मतलब वो ऐसी एक गन होती है कि सामने कैनवस पे you shoot your gun and it shoots lots of colors sprays at the same time. I don't know, something like that. तो कोई ना कोई तो इवेंचुअली, मतलब द आइडिया इज आप 50 चीजें कर लो और उसमें से इवेंचुअली एक दो तो आपकी लक लग जाएगी. इट्स लाइक लॉटरी नंबर्स. आप 100 टिकट खरीद लो, यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. तो दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरगन सक्सेस. कि लोग इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिएटिव वो सोचेंगे कि स्कैटरगन चला लेंगे और कुछ ना कुछ तो फंस जाएगा. कि जैसे मेले में हम वो फेंकते हैं रिंग, राइट, कि 10 रिंग का ले लेंगे और खेलते रहेंगे आधा घंटा तो कुछ ना कुछ तो लग जाएगा. तो इस तरह से भी क्रिएटिविटी होती है, बट इट्स अ मिथ कि ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है. देयर इज डेफिनेट वेज टू डू इट. देन बिग जंप एंड स्मॉल जंप, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है. बिग जंप इज लाइक टेकिंग अ रियली अ बिग जंप, जैसे कि आईफोन वाज अ बिग जंप इन द फोन इंडस्ट्री. बट देयर आर स्मॉल जंप्स, राइट, कि कैमरा हर साल, मतलब 4 GB 4 MB से हम लोग 128 MB तक आ गए कैमरे में. तो दीज आर स्मॉल जंप्स इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ द फोन्स, राइट. तो इस तरह से स्मॉल जंप पे भी काम चलता है. मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, सो गुड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन बोथ थिंग्स, लाइक ब्रेक थ्रूस, दुनिया बदलने वाला आइडिया, उस तरह की चीजों पे काम करते हैं. स्मॉल जंप आइडियाज, ठीक है. देन ग्रुप और इंडिविजुअल, लास्ट मिथ. इट्स नॉट अ मिथ पर से, कि ये भी एक होता है कि नहीं ग्रुप में ही बैठकर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए. तो एक्चुअली ये भी मिथ है. मतलब यू डोंट नीड अ ग्रुप टू बी क्रिएटिव. यू कैन learn it as much as you learn hockey, swimming or guitar or reading or anything else. कि आप सीख लेंगे, एक टेक्निक्स है, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं बैठ के. आपने आधा घंटा निकाल लिया, यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद यू. नथिंग रॉकेट साइंस कि आपको कुछ नेट से टेम्पलेट निकालना है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है. दे आर वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन में भी. बट कैसे करना है, डेलिबरेटली आपको रूल्स फॉलो करना है उसमें बस. और वो आधे घंटे में यू विल सी सडनली यू हैव ओपन योर पर्सपेक्टिव अ लॉट. यू हैव ब्रोकन आउट ऑफ योर यूजुअल थिंकिंग. जैसे हम सुनते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट कैसे करना है ये कोई बताता नहीं है, राइट. ये भी बहुत होने सुना होगा. आई एम श्योर ये इफ आई लास्ट 50 पीपल और मोर विल रेज हैंड्स. और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये भी सुना है बहुत लोगों ने. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, लेकिन कैसे करना है ये कोई बताता नहीं है कि बॉक्स क्या है. बॉक्स, सो वी विल सी व्हाट दैट बॉक्स इज मे बी इन दिस प्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है. सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी के इनोसेंस हम देखते हैं. इट्स अ क्लासिक क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन. व्हाई चिल्ड्रन आर सो क्रिएटिव इन द फर्स्ट प्लेस. देन वी हैव एक्सपीरियंस, where people are experienced people, like older people in our house or senior people to us. They have a lot of knack of coming up with right solutions, isn't it? That's why we ask our parents, whether we or our brothers or our mentors or teachers, कि ये job करना चाहिए कि नहीं, ये क्या, because they have experience, right? And with that experience they can suddenly see, or not suddenly but gradually they have developed their brain to see more and more. With more experience they are able to see a better picture of the problem that you are in. तो ये experience से भी sources से creative हो जाते हैं आप. Then slow reading, more learning. Another concept कि you read between the lines.
रीडिंग बिटवीन द लाइंस का अर्थ यही होता है कि आप स्लो पढ़ते हैं, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन स्पीड बट यू आर फोकस्ड ऑन मोर लर्निंग। जैसे समझो एक, आपको पता है रीडिंग स्पीड भी होती है, एक्चुअली रीडिंग स्पीड पे भी लेक्चर हो सकता है पूरा 1 घंटे का। यू देयर आर वेज टू रीड द होल 2 पेजेस ऑफ द बुक इन merely 3 seconds or 6 seconds, and then you can read the whole book in 18 minutes, and then you can read 52 books in 28 days। इस तरह के ऐप भी आ गए हैं अगर रिसर्च करोगे तो, लाइक हाउ टू बिकम अ सीईओ इन 52 days और रीड 52 बुक्स। इस पे ऑडियो बुक्स पे भी बहुत काम हो रहा है, ठीक है। बट द आइडिया, दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग स्पीडिंग थिंग्स अप, राइट। बट हम यहाँ कह रहे हैं स्लो। तो स्लो क्या है, यू आर स्टक ऑन अ वर्ड, आप एक ही वर्ड या एक ही लाइन ही पढ़ते बैठे हैं 1 घंटे तक। तो दिस इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और दिस वाज जस्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, टू बिग एन एग्जांपल। मे बी यू टेक हाफ एन आवर और आधे घंटे से आप एक 2 पेज ही पढ़ पाए या आप एक ही पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डूब गए उसमें, एंड यू आर लर्निंग सडनली मोर एंड यू आर रिलेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन विद व्हाट यू नो, रादर देन जस्ट हैविंग द गोल टू फिनिश अप द बुक एंड स्पीडिंग पेजेस अप। ठीक है, तो ओके, लेट्स सी मोर। सो लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो दिस पिक्चर, राइट, दिस बॉक्स, दिस इज द बॉक्स ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जब हम बोलते हैं ये वाला बॉक्स है, दिस बॉक्स इज ऑल्सो, यू कैन कॉल इट लॉजिक बबल। लॉजिक बबल का मीनिंग होता है कि इन एनी गिवन सिचुएशन अ पर्सन विल, हाउ अ पर्सन विल बिहेव बेस्ड ऑन इफ ऑल लॉजिकल कंडीशंस आर करेक्ट। तो देयर इज अ रीजनेबल लाइन ऑफ थॉट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री ऑफ रीजनेबलनेस। सोशल रूल्स, सो टू से, कि हम किस तरह से बस में ट्रेवल करते हैं, देयर आर सम सोशल नॉर्म्स दैट वी एक्सेप्ट, एक लॉजिकल बिहेवियर हो जाता है। तो इन दैट बाउंड्री यू ऑलवेज थिंक। But what happens when a chance, accident, mistake or madness happens? You suddenly jump. तो इस तरह से बहुत सारे inventions और discoveries हो जाते हैं by chances, by mistakes, by penicillin, various drugs in the medicine industry, and various other things have been discovered by chance and accident. Deliberate कोई कुछ कर नहीं रहा था, सडनली कुछ ऐसा हो गया कि सामान गिर गया और वो डिश में और वो दूसरा केमिकल उसमें गिर गया, इस तरह से चीजें क्रिएट हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिएट हुई है when people suddenly jumped out of the box by nature, or by, जैसे इनके Einstein and Edison had basically fires in their labs once or more during their time of the lives, because light ही नहीं होती थी उस समय, and they used to use diyas and such and wax candles maybe। तो आग लग जाती थी more often, very often, साल में 2-3 बार टाइप्स, और कई बार उनके लैब्स जल के खत्म हो गए विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज इनसाइड एंड मटेरियल्स इनसाइड, सो दे यूज्ड टू स्टार्ट अफ्रेश। तो मिस्टेक से भी क्रिएट हो जाती थी चीजें। एंड लेटरल थिंकिंग में क्या होता है, यू सी द डायग्राम ऑन द राइट, कि आप यू टेक अ लेटरल जंप। ह्यूमर में भी यही होता है, हमने देखा था, और लेटरल थिंकिंग में भी यही होता है, आप डेलिबरेट टेक्निक से जंप कर लेते हैं आपके एग्जिस्टिंग यूजुअल लाइन ऑफ थॉट, तो सडनली आपको वो चीजें दिखने लगती है, मोर रिसेप्टिव। Lateral thinking, why is it called such? The term was invented by Mr. Bono. Now, you can see that you cannot dig a hole in a different place by digging the same hole deeper, है ना। हम कुआं खोद रहे हैं तिल ढूंढने के लिए, और 10-100 मीटर तक खोद लिया, और यहाँ अब आपको दूसरी जगह पर खोदना है, तो उसी होल को डीपर करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। यू कैनॉट डिग अ होल इन अ न्यू प्लेस बाय डिगिंग द सेम वन डीपर। दिस इज वर्टिकल थिंकिंग, एंड दिस इज द मिथ ऑफ, और दिस इज द सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमें लगता है कि हार्डवर्क विल प्ले ऑफ एवरीथिंग, राइट। हमें लगता है ना, हम बोलते हैं कि एसेंशियली हार्डवर्क विल पे ऑफ, लेकिन इफ यू आर डूइंग हार्डवर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट मे नॉट, राइट, इट विल वेस्ट योर टाइम। तो वर्टिकल थिंकिंग क्या है? वर्टिकल थिंकिंग इज टेकिंग अ पोजीशन एंड सीकिंग टू बिल्ड ऑन दैट बेसिस। यू कैन सी इन द डायग्राम कि यू इधर स्टेप, जैसे आप एरोज देखते हैं तो 2 पहाड़ हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो इस तरह से आप बिल्ड करते हैं थिंकिंग में, यू गो डीपर एंड देन यू गो डीपर एंड यू गो डीपर। Okay, now don't get me wrong. It's not that vertical thinking is bad or it is not useful. It is useful for various places where you need to definitely dig deeper into a problem and find that way. But then because of this habit, you have lost, we have lost to look at lateral ways of entering, like digging a hole into another place. Okay. अब lateral thinking के definitions देखेंगे. So ये, this is the patterns of perception जो हमने पहले देखा कि ब्रेन में पाथवेज बनते हैं,
और वर्ल्ड आउटसाइड, यू सी इन द डायग्राम, वर्ल्ड से परसेप्शन आता है, यानी कि इमेजेस आते हैं, आईज में हम देखते हैं, आवाजें आते हैं, टच सेंसरी हम फील करते हैं। तो ये सारा एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया से पैटर्न के थ्रू अंदर जाता है ब्रेन में। आप देखेंगे कि कैचमेंट एरिया इज बिग and patterns are very lean. Once it enters into the pattern, it will just repeat the fixed set of behavior from your brain. Brain will activate that routine or pattern or habit, और वो exactly वैसा experience होगा आपको, although there is a minor difference, or so there is a large catchment area. This is the logic of self-organizing information systems. This is how brains would work. Now, lateral thinking की क्यों जरूरत होती है? Because you have to break these patterns, as we saw repeatedly with various examples. We saw with humor, we saw with other examples. तो क्या lateral में क्या होता है? Going sideways to try different perceptions, point of entries to get us out of the usual line of thought. Points of view. Now let's say there is a building. आप जाके बिल्डिंग, आपको किसी ने बोला कि ये बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ, और आप जाकर के बिल्डिंग के फ्रंट से आपने एक फोटो ले लिया और आपने जाके वो बंदे को दे दिया. इज दैट द ओनली व्यू ऑफ द बिल्डिंग? think of a building like Pentagon, or think of a building like White House, or think of a building like Gateway of India, or any other building for that matter, because every building is in 3D, right? और आपने एक फोटो ले लिया, that may not be sufficient. Now think of another person who walks around the building and take photographs from different angles, all of which are equally valid. So this is the point of view. क्या होता है typically हम एक ही एंगल से देखते हैं, and then we mix our ego with our thought, and then we don't want to change, and then we don't see other angles. So it's like lateral thinking is also like point of view. You walk around the building and you look at the building from different angles, which may be completely different. हो सकता है पीछे का बिल्डिंग पूरा जला हुआ हो, आग लग गई थी और पीछे का पोर्शन जल गया था, और आप आगे का फोटो लेके आ गए. इट लुक्स लाइक अ व्हाइट हाउस, बट पीछे से आपने देखा तो इट्स लाइक, यू नो व्हाट इट इज, इट्स लाइक बेसिकली डेब्रीज. इट कैन हैपन, राइट और नॉट? बट बाहर से देखा तो पता नहीं चलेगा ना. एक ही फोटो निकाला तो पता नहीं चलेगा कभी भी. तो इसीलिए लेटरल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. तो हमें लगता है जनरली इन एनी गिवन सिचुएशन वी हैव वन आइडिया एंड दैट इज सफिशिएंट, बट देन वी आर रॉन्ग, बिकॉज देयर आर टेक्निक्स who will make you look at that same problem from different angles. Okay, so this is a beautiful concept. Now let's see what is logic bubble. तो अभी लॉजिक बबल तो पीछे हमने देखा था उस बॉक्स को, बट रॉक और वाटर लॉजिक क्या होता है हम देखते हैं. रॉक और वाटर लॉजिक होता है कि आप, रॉक इज हार्ड लॉजिक, you don't want to change. Water is soft logic, where it's like perception. So some keywords are given here. A rock plus a rock is two rocks. But with water, you mix two glasses of water, you just get water, right? You don't get two glasses separately. It mixes and merges with each other. The boundaries are static versus fluid, and hard edge and soft and fuzzy edge again. So our perceptions, the brain neural pathways, are the water logic kind, not the rock logic kind. Okay, so that is rock or water logic. Design and analysis. Now let's see this another key aspect. I don't think too much of content is pending, so don't worry. We'll wrap up in next 5 to 7 minutes. We'll try to do that, and then we can spend just a couple minutes for questions if anyone has. So design and analysis. Design बहुत कम लोगों को समझ में आता है. अभी अभी ये हुआ है कि डिजाइन थिंकिंग वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एनालिसिस सबको पता है. Analysis is breaking down the problem. It's a common word. It's a previous history word, right? मतलब generally हम analyze करते हैं बस हर चीज. That is how our brain is designed. A brain is designed to solve problems. Everybody wants to solve problems. But analysis में क्या होता है? What is पूछते हैं आप हमेशा. एक मैटर आपको एनालाइज करने को दिया गया, आप फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज इन द मैटर. आप पूरा उसको चीरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं. दैट इज एनालिसिस. But design is a completely different ballgame. There are problems in the world, as we will see in the next slide or so, that cannot be solved by analysis. And analysis is the only kind of thinking that we learn in schools also. We are given a problem and we are asked to analyze the problem. But we are never given design problems in school, which is really the sad part, where we have some opportunities, where we can think of opportunities. So design thinking is not being taught. It is very rare. It is very recent that people are getting interested in such kind of thing. ठीक है.
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? जब स्टैंडर्ड रूटीन नहीं इनफ होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया. यू हैव टू डिजाइन अ वे फॉरवर्ड because there are so much problems where we cannot find the cause, or there are so many causes we cannot eliminate, like world level problems, for example pollution in the world. Now pollution is not a problem that you will solve by doing B instead of A. It's a bigger problem, right? Hundreds of causes of pollution and hundreds of billions of people are being affected by it. It's not a simple problem that you can solve just by analysis. All the analysis available, Mr. Prime Minister and Mr. Government, people have all the reports that can be available from weather stations and from factories and everything, but still a solution cannot be reached as easy as it seems. Problems of the world, like corruption, for example. So these are heavy things where there are so many causes we cannot eliminate. So in such problems, you cannot just problem solve it, right? You have to design. Okay. Now also remember that it is the poetry of speculation that makes a scientist great versus being just good. So there have been millions and thousands of scientists who were also great, who were also good. But what makes a scientist really great is the poetry of speculation. He tries, he proposes parallel hypothesis. He suggests parallel thing, mold fitting versus create. Okay. Uses of creativity. ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना काम का होता है creativity, because you can everywhere you can apply it. You can apply it in commerce and improvement of the world. You can apply it for world problems. You can apply it for commerce in the sense business. You can shape new ideas. You can then value an opportunity. You can suddenly see value. You can increase value of existing products. You can create opportunity for the future. There is future, there is innovation, there is motivation, and there is lifting of higher purpose. नहीं तो कोई बोलेगा क्रिएटिविटी क्यों चाहिए, तो इसलिए भी चाहिए बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट यू हैव. किसी के पास कोई वॉन्ड है या और कोई एंटीक फर्नीचर है और उसको अगर आप हथौड़ा मारने के लिए यूज करते हो, नेल पे ठोकने के लिए उसको यूज करते हो, राइट? तो यू आर नॉट यूजिंग इट to its higher purpose. So creativity is also required to understand what is the best use of something or how to redesign something. So uses are everywhere, definitely, and I think we are almost there. Yes, we are there. So this is just the part one.